First class. So we start with real numbers. So we have just discussed the basic introduction of real numbers. Okay, we have not started the topic yet. What we have discussed? Rational and irrational. Rational and irrational numbers. That P by Q form? Yeah. We have discussed. Okay. So actually real numbers are of two types. Okay. First is rational number. Okay. Second one is irrational. Okay. What are rational numbers? Which we can represent in the form of P by Q, where Q cannot be 0. I told you why Q cannot be 0, because that term will become undefined. If I say 1 by 0, so it will be not defined. Okay, but 0 by 2, it is 0 only. Okay. बताइए आपको इस चीज can you tell why it is 0 actually? How it can be 0? Okay. We have actually discussed 1 by 2. What do you mean by 1 by 2? Half. Any other meaning? 0.5. Okay. How about half? Actually, if I have a whole thing, let's say I have a circle. Okay. What 1 by 2 means what? Actually, we have divided this complete whole thing into two parts. Okay. And out of that, I want how many parts? One part. Okay. Got it? So in the same case, I have divided the whole thing into two parts. And how many parts we want? 0 parts. Okay. So that's why it will be equals to 0. Okay. Can I say what is mean by this in terms of this? I have a whole thing. In how many parts I have to divide? 0, na? That means we have not divided anything, and we want one part. Is it possible? No, na? We have not divided actually anything. Okay? So that's why it is not. Got it? You want me to repeat? Yes? No. So any number that can be represented in the form of P and Q are called as rational numbers. Okay, so but one condition is there, Q cannot be 0. Okay, one more condition is there, P and Q are integers. Okay, they should be integers actually. One more condition, can anyone tell? P and Q are co-primes. Okay. What are prime numbers, beta? Divided by the number itself. 1. Okay, so it has only two factors actually. So let's say 2. Only we have two factors, 1 and 2. 3, 1 and 2. 1 and 3. Okay, so it has 2. So is 1 is a prime number? No, because it has only one factor 1. Okay, self भी वो same है और 1 भी कुछ भी. ठीक है, so it's not a prime number. ठीक है, so what do you mean by co-primes? That means the numbers don't have any common factor. Okay, if I say 3 by 6,
So are they co-prime? No, because they have a common factor as 3 now. Okay, 2 by 6, are they co-prime? No, they have a common factor as 2. We can simplify now. Okay, so 1 by 3. So 1 by 3 is a prime, a co-prime or not? Yes. P value 1, they don't have any common factor. Clear? Got it? So it's actually quick revision that we have discussed in the last class. So I'm taking some examples for rational numbers. So I said 2, integer. Is it a rational number? Yes. Yes. But is it in the form of p by q? I can write now 2 by 1. Same number. Huh? Okay. So it's a rational number. Clear? Because 2 is integer. Q means 1 is also an integer. Okay. So that's why it's a rational. 1.5 2. आप बोलो बेटा, is it a rational number or irrational? देखो ये इंटीजर नहीं है ना, फ्रैक्शन है ना, ठीक है, पॉइंट्स में है और ये इंटीजर है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन से इसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। आएगा 5 से कट होगा तो 3/4, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट इट इज एन रैशनल, गॉट इट, ठीक है। तो अगर बात करें इरेशनल नंबर्स की, so √2 is an irrational number because we cannot represent in the form of p by q, क्योंकि अगर मैं रिप्रेजेंट करने का by 1 लगा है, but √2 is not a integer, बोला मैंने p और q क्या होना चाहिए, वो should be integer, ये √2 is not an integer. Integers are what, -3, -2, -1, 0. Okay, I told you 0 is a neutral integer. Okay, 1, 2, 3 are positive integer, -1, -2, -3 are negative integers. Okay, clear? So √2 is an irrational number. √3, it is also an irrational number. But √4 rational, because √4 means square of 2, na? So it will be 2 only. If I take a square root, so it will become 2 only. So but 2 is an rational number. Okay, clear? आप अपनी बुक्स में करेक्शन करा दिया था, ठीक है। √5 irrational number, ठीक है। अभी हम लोगों ने शायद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वी हैव नॉट डिस्कस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्म में जितने भी आएंगे वी कैन से दैट द नंबर इज irrational. We have discussed pi is an irrational number, but its value is 22/7. So it is an rational number because integer upon integer. So rational number, but it is, I am saying it is an irrational number. So how it can be possible? Irrational number is equals to rational number because That is the approx. This is not the exact value of pi. This is an approx value of pi. Got it? ठीक है। Now take some examples. Let's say I am dividing 1 by 3. So what will be the value? Decimal form 0.333. ये कभी complete division नहीं होगा, है ना? We got पॉइंट लगा के 0, ठीक है। 3 times 9 1 again 0 3 9 again 1 3 again 1, ठीक है। It will not terminate. Okay, so we can say that this is non-terminating decimal. Can I say? It's not terminating. If I say 1/2, so it will be
0.5. Sir, Okay. 1/3 is non-recurring also. That actually I'm going to discuss it. Wait. Okay. Actually, you don't know what is recurring actually. So that concept I'm going to discuss. First, I want to discuss that terminating and non-terminating. Then next step I will go there. So this is actually 0.5. Okay. So it will terminate or not? Terminate ना? अब इसके बाद तो नहीं जीरो में जाना मुझे ये डिवाइड किया 2 का 1 में पॉइंट में कॉपी 5 टाइम्स कंप्लीट ना रिमाइंडर विल बी 0 नाउ ओके सो ये क्या होगा कंप्लीट हो गया ठीक है सो वी कैन से दिस इज टर्मिनेटिंग बेसिकली got it clear this is terminating decimal this is non terminating okay let's say I'm getting value as 1.232323 this is also non terminating decimals okay let's say 2.57532596 this is also non terminating ठीक है लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है देखो इसमें क्या होगा एक ही डिजिट बार-बार क्या होगी रिपीट हो रही है ठीक है इसमें कुछ भी रैंडम आ रहा है ठीक है तो जब भी रिपीट हो कोई पैटर्न वी गॉट सम पैटर्न ठीक है सो वी कैन से दैट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग सो ओके नॉन टर्मिनेटिंग बट वी कैन से दैट इट्स अ रिकरिंग और रिपीटिंग ओके so we can say this is non terminating recurring decimal okay any confusion no okay in this case can I say this is not terminating non terminating and can I say this is non recurring okay अभी ठीक है बेटा ठीक है so this is terminating so first we have two definition terminating and non-terminating clear okay if the decimals will complete so we can say terminating decimal will not complete division will not complete so we can say non-terminating in non-terminating also if we got a pattern so we can say non-terminating but recurring okay or repeating clear decimals clear in this case we are not getting any pattern so this is a non-terminating non-recurring decimals okay clear अभी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क Sir, is it compulsory that if it is non-terminating, it will be non-recurring, or if it is terminating, it will be recurring? टर्मिनेटिंग होगा तो कुछ भी चलेगा है ना लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो दो ही ऑप्शन है ना either it can be recurring or non recurring टर्मिनेटिंग में कुछ भी चल सकता है पैटर्न कहां से क्योंकि इसमें क्या इनफिनिट तक जा ही नहीं रहा ना we have fixed number of digits तो उसमें रिपीटिशन की बात ही नहीं होगी ना क्लियर इसमें ऐसा हो सकता है 0.121212 कंप्लीट हो गया सो दिस इज टर्मिनेटिंग ना तो पैटर्न की बात ही नहीं आ रही भले 3 बार आया लेकिन आगे का मुझे पता ही आगे का तो कंप्लीट है ही नहीं कुछ है ही नहीं तो टर्मिनेटिंग ठीक है सो फर्स्ट डिसाइड is it terminating or non terminating then you have to go with in case of non terminating you can get the recurring or not repeating clear got it okay I will write some numbers you have to tell whether they are terminating non terminating or terminate if not terminating whether they are recurring or non recurring clear okay so one by one I will ask 0.51666 what are you tell we have 3 options terminating non-terminating recurring non-terminating non-recurring you just which type of decimal it is non-terminating non-recurring okay but 6 is recurring na repeating na it's not necessary it will start from here okay it can start from anywhere but this pattern should be continued okay I can write this form also
5 1 2 1 2 1 2, okay, or 1.1256, then 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Now we are getting a pattern, okay, clear, ठीक है. So we can represent this in the form of, let's say अगर recurring है we can represent 0.3. start कहाँ से हो रहा है, recurring repetition 3 से start हो रहा है और 3 repeat हो रहा है, so I can put a dash, okay. This means 0.333, that means 3 is repeating, उसके ऊपर dash अगर लगाया, ठीक है, और single digit है तो we can write in this form also 0.3 dot. लेकिन एक से 1 से more than 1 अगर repeat होता है तो you cannot put dot, okay. So in this form can I write it as 0.51, ये तो repeat नहीं हो रहा है ना, 6 repeat हो रहा है, I will put bar. Got it? इस केस में क्या हो जाएगा, 0.512 दो repeat हो रहा है तो I will put on 4th. Clear? In this case 1 point, यहाँ तो repeat नहीं हो रहा है ना, 1 2 5 6 repetition start from 1 2 3 and this will repeat. Okay, clear, got it? Sir, if it repeats 3 times or more than 3 times, it is recurring, right? No, who told? This dotted means this pattern will repeat, na, again 1 2 3 will come, it will comes infinite number of times, okay, clear, okay. Just tell me 1.5.363636, okay. Which type of one by one, yeah? Which type of decimal, terminating, non-terminating, or recurring or not? Recurring, non-terminating, recurring, you see, okay. You non-terminating, recurring, you terminating में recurring तो था ही नहीं ना, केवल terminating, you terminating. बेटा ये देखो terminate ये खत्म हो गया यहाँ, dotted नहीं लगाया मैंने, है ना, confusion हो गया ना, समझा. ये कब होता है, नॉन टर्मिनेटिव मतलब कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, वो मैंने यहाँ डॉट कुछ नहीं लगाया, दैट मीन ये कंप्लीट हो गया यहाँ डिवीजन, है ना. आप इसमें प्रॉब्लम में आ गए, आप ये सोचने लगे, है ना. टर्मिनेटिंग था वो कंप्लीट हो गया, डिवीजन कंप्लीट हो गया, गॉट इट, ठीक है. अभी तो नहीं कंफ्यूज हो गए, ठीक है. तो पहले ये देखना है मुझे डॉटेड है कि नहीं वहां पे, डॉट साइन, then only you can say, ठीक है. डॉट साइन है तो बात ही नहीं है, तब तो क्या होगा मेरा, डायरेक्टली you can say it's a terminating decimal, ठीक है. रिकरिंग की बात कब आएगी, जब हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 3 टाइम्स ही है ना, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, 3 ही बार रिपीट हुआ ना, ठीक है. तो टर्मिनेटिंग केस में बात ही नहीं है रिकरिंग की, इस केस में आ रही नॉन टर्मिनेटिंग की बात है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, गॉट इट, क्लियर, ठीक है. अब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, if the number is terminating and non-terminating and recurring, ये दो cases आएंगे. In that case the number is rational, clear. यहाँ पे मैं बोलूंगा डेसिमल्स के लिए, है ना, अगर क्या है टर्मिनेटिंग है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है रिकरिंग है, द नंबर इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर, क्लियर. यहाँ पे कौन सा बचेगा, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्लियर, ठीक है. अभी रैपिड फायर खेले, ठीक है. नंबर बताना जल्दी से, आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है. रैशनल और इरैशनल, फास्ट. इरैशनल, श्योर. देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रैशनल राइट, है ना. तो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो दैट इज रैशनल. केवल एक ही केस है
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, आप बताओगे, ठीक है, दिस नंबर रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग है तो सोचना ही है रैशनल, आप बता ये वाला रैशनल और इरैशनल, रैशनल क्योंकि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्लियर, ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन हो तो नहीं है, ठीक है, कॉपी करना तो यू कैन कॉपी, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आपको कॉपी करना है और कंपल्सरी, आई थिंक हम लोग वो इंसर्शन वाला भी टॉपिक डिस्कस कर लिया ना, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन, हाँ वो वाला ये ठीक है, वो एवरेज ले लेके यहाँ पर बहुत बड़ा है, ये चीज जरूर लिख लेना, रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, और जैसे मैं 2 की बात करूं तो एक्चुअली 2.0 है ना टर्मिनेटिंग, अगर इस फॉर्म में नहीं देखना तो इससे भी देख सकते हो, है ना, टर्मिनेटिंग बोल के डायरेक्टली हम लोग रैशनल नंबर, आपका कौन सा स्कूल है बेटा, होता है साथ पढ़ना नेहरू, आपका रैंक, आप भी रैंक से है ना, आपका कौन सा था, इंजीनियर, डन, कहीं पे कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, साइन कर दो, so let's say I have 2 and 4, okay, ये एग्जाम में डिस्कस किया था, I want to insert one number between 2 and 4, okay, आप लोगों ने नहीं किया साइन, मैंने किया था, ठीक है ना, तो साइन कर दो ना, लास्ट क्लास में थे ना केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स के भी केमिस्ट्री, okay, so we have two numbers 2 and 4, I want to insert one rational number between this, okay, first start with integer, okay, so I want to insert one integer between this, okay, so what will that integer, 3 only, okay, so this is the 3 integer, okay, now
again I want an integer between 2 and 3. Is it possible? No, because we don't have any integers between 2 and 3. Okay? आपने नहीं किया? Fine. Okay? So there is no integer between 2 and 3. Okay? So we cannot insert. But if I say that I want a rational number between 2 and 3. So I can write it as any rational number 2.1. Okay? Or 2.123. Is it? Can I write? Any number, no? That will be more than 2 and less than 3. So we have infinite number of between 2 and 3. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. Okay? इसके अलावा भी कोई numbers होंगे इनके बीच में 2 and 3 के बीच में. We have instead of before that 2.001 is also there, huh? Or 0.00001. So can I say that there are infinite number between 2 and 3? Yes. It can be 2.01, 2.002, 2.0023 or 2.00001, 0.0003 also. So we have infinite number of rational numbers between any two numbers. Clear? Okay. Similarly, यहाँ से बीच में भी बहुत सारे numbers होंगे. ठीक है? तो question will ask find the insert the two rational number between 2 and 3. Okay? आपको क्या करना? Simply directly लिख सकते हो. You can write 2.1 and 2.2. Two numbers 2.3 also, 2.4 also, or you can directly add these two numbers 2 plus 3 and divide by 2. So you will get a number between 2 and 3. Okay, so number will be 2. This will be 5 by 2 and 3. Okay, clear? I want the number between 3 and 4. So can I write 3 plus 4 by 2? So that will be equals to 7 by 2 and 4. Okay, clear? So how many numbers I have inserted between 2 and 4? 3. I want 5. So I can take mean of this. Okay. So I'll add 2 plus 5 by 2 and divide by 2 also. ठीक है, एवरेज लिया ना, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया था ना, तो ये देखो नंबर्स के बीच में ऐड किया एंड डिवाइड बाय 2. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लें, क्या आएगा? यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं 2, so 4 plus 5. ओके, और डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी थे. ठीक है, 2 by 1 ये क्या हुआ? रिवर्स हो जाएगा. So 2 कहाँ पे आएगा? This will be 9 by 4 only. Got it? ठीक है, तो यहाँ पे 9 by 4 आएगा. Okay, so it will be more than 2 and less than 5 by 2. Got it? Okay. Now again I want one more number, so I can take here average, or you can take here or here. Okay. So I think you can say that I can insert infinite numbers between any two numbers. Okay. All are rational number only. Okay. अभी rational की बात कर रहे हैं. We are inserting rational number between any two rational numbers. Got it? ठीक है. 0 is a rational or irrational number? I can write it as 0 by 1 or 0 by 2. I told you na, 0 divided by any number, it will always be 0 only. Okay, so this is 0 by 1, 0 by 2. This is P, this is Q. Okay, so I have represented this in the form of P by Q, where Q is not equals to 0 and they are both are not co-primes. Both are co-primes. So can I say this is a rational number? So 0 is a rational number. Okay, okay, clear? So first question is like that only. If 0 is a rational number, if 0 is a rational number, the answer will be yes. Okay, can you write in the form of P by Q? Yes, I can write P by Q in the 0 in the form of P by Q only. Okay. Second question is insert 6 numbers between 3 and 4. So 6 number between 3 and 4. बताया मैंने 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. ठीक है, या डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं करना, तो यू ऐड 3 and 4 divide by 2, you will get one number. Again do same thing, 3 and 4 you will get 7 by 2. Okay, again इन दोनों के बीच में 3 plus 7 by 2 by 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 by 2 plus 4 upon 2. ठीक है, अगेन इन दोनों के बीच में इंसर्ट करो, फिर ऐसे करके you will get the 6 numbers. Got it? Clear? So this was your second question from the exercise. ठीक है, क्वेश्चन आप लोग करो क्वेश्चन, ट्राई करो एटलीस्ट. स्पीड पास तो नहीं है, अगर कभी लगे तो हम सर थर्ड क्वेश्चन. हाँ थर्ड आई थिंक बोला था कि ये करने को. नहीं बोला. 3 by 5 and 4 by 5. Okay, how many numbers we want? We want 5 rational numbers with it. Okay? Yes. We just try. We want 5 numbers, okay, rational numbers, 5 rational numbers. तो बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने आपको मेथड्स बताया था. So the answer should be in decimals or in fraction. Okay. सर Chana. Any? How much होगा? 5 numbers. 5. 5 rational. So I have 25. So, So you do. क्या करो, ये तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, विल गेट अ नंबर. अगेन यू डू. ठीक है, तो क्या होगा, आपका लेंथी प्रोसेस होगा. ठीक है, बेटर क्या करूं मैं अभी, अगर मैं देखूं इनके डिनोमिनेटर आर इक्वल, इफ आई से नंबर्स आर 1 by 2 and 1 by 7 and 4 by 7. Okay, so denominator are equal, okay. So can I say directly 1 and 4, na? So gap is there, so it will be 2 by 7, 3 by 7, they will be in between only. Okay, but in the case we don't have any integer between 3 and 4, although denominators are equal, na? Okay, so in that case what you will do, I want 5, na, integer, so 5 plus 1, this is not hard and fast rule. 5 plus 1 is 6, so what I will do, I will multiply it into 6 and divide it by 6, balance हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It will cancel out ना, again I will get 3 by 5. Here also I will multiply it by 6 and divide by 6. Okay, so this number will be 18 by 30. Okay, and this will be 24 by 30 only. Denominator are same. Okay, can I write it as 19 by 30? Will be the next number. 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, and 23 by 30. How many numbers I got? 5 numbers. ठीक है, आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, that is also correct, no problem. You can multiply by 12 also. Okay, if I multiply by 10, so it will be 3 by 5 into 10 by 10. It's your choice. Okay, 4 by 5, 10 by 10, I am multiplying it 10 by 10. So this will be 30 by 50 and 40 by 50. So in between 30 and 40 we have how many numbers? 9 numbers. Okay, so it will be any 9.
you can take any 5 between 9 these three. So 31 by 50, 32 by 50, 33 by 50, 34 by 50, okay, 35 by 50. Okay, I want only 5, so I am writing only 5. Clear? But actually, like I did, if we want 5 rational numbers, so we'll multiply the number with 5. But it is like No, if I want 5 now, so I have to multiply with plus 1. no, but if the answer comes now 15 and 20, so we'll only get 4 rational numbers. That's fine. So if, we have to multiply with a 6. number bigger. So it is like if we want 7 rational numbers, so we will multiply with 7. 8 by 8 plus 1. You multiply with 5 and you didn't get 4. You get only 4 now. Yeah. So that's why you multiply by 6 now. Got it now? You have to multiply by one more number. If you want 6 now, so you have to multiply by 7. Okay? This is not fast and loose. C multiply by 10. C also better. Okay? C got even 9 numbers. Out of 9, C wrote only 5. Any 5. Any of the numbers are okay. Like Anything. Okay, 21 will be also. Because I told you na, there are infinite numbers between any two numbers. Okay? And they are in the form of p by q. So you can surely say that they are rational numbers. They ask you to insert rational numbers only, not irrational. So if we would write 3.1 by 5. 3 point, 1 by 5. well, you have to convert that na, 31 by 50. Okay? One question you can ask, you can simplify this also. After inserting, you can simplify, this will be 16 by 25. Na? Okay? You can do that also, 17 by 25. Okay? Clear? Got it? So there are numerous methods actually. Like that you have one number 3 by 5 and 5 by 7. Now you don't have denominator are equal. Okay? So what I have to do? I have to take LCM actually. So can I say if I multiply by 7 here and here I can multiply by 5. So now this will be 35 and 35. Huh? So this will be 21 by 35 and 25 by 35. Now I can insert 22 by 35, 23 by 24 by 35. If you want more, you can multiply by any other number 10. Okay, but you have to see that that denominator should be same. Now you multiply by any number, 2 or 3. Clear? First you have to do the denominator as equal. Clear? Okay. So I think these statements we have already discussed. You can repeat the statement. You just tell me whether they are true or false. Start with you. Okay. Every natural number is a whole number. False. You. Every natural number is a whole number. True. Natural number means 1, 2, 3. No? So they are actually also a whole numbers. No? Okay. Can I say every whole number is a natural number? No, because 0 is not a natural number. 0 is in the whole number. Okay. Next, every integer is a whole number. You can. Every integer is a whole number. No, why? 0 is in the whole number, na? So statement should be true, na? You are answering correct, but your reason is not correct. I'm repeating, every integer is a whole number. True? False? Why? Anyone? Because the whole number is actually, because 0 is positive. So
And integers include positive and negative. Actually, integer means it can be negative also, no? -3, -2, -1. Okay, but they are not whole numbers. Got it? 0 chalega, because 0 is a whole number. But negative terms में integer में problem हो जाएगी. Integer can be neutral, can be positive, can be negative. Okay, clear? तो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ मैं 0, 1, 2, 3 ये फॉलो करेंगे whole number है, लेकिन यहाँ क्या होगा -1, -2, -1. Okay, they are integers but they are not whole number. Okay, last one. Every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. True or false? Every rational number is a whole number. No? Every rational number can be in the form of p by q. It's not a whole number. Got it? Clear? Any confusion? No, na? Every rational number is a whole number. No. Rational number can be in the form of py. It is a rational number, but it's not a whole number. Got it? Clear? Next question. See the next question. Question number 5. Find 3 rational numbers between question is find 3 rational numbers between 3 by 5 and 8 by 9. We want 3. Our conventional method is we directly add this and divide by 2. लेकिन वहाँ पे मुझे LCM लेना पड़ेगा, फिर डिवीजन वगैरह करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेटर क्या करूँ मैं इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दूँ. ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5 है तो मैं 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 5 by 5 और ये 9 है तो इसको 9 by 9. Now denominator will be equal. Okay, so this will be 27 upon 45. Okay, this 40 by 45. Okay, we want only 3, any 3. So 28 by 45, 29 by 45 and 30 by 25. Okay, याद रखना insert between बोला है, mid में नहीं बोला, कहीं पे भी चलेगा, है ना? Got it? Clear? तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करेंगे आंसर्स. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके जो बुक में आंसर दिया है वो ही करेक्ट है ना. यू कैन राइट अ डिफरेंट आंसर. नेक्स्ट इज -1 by 9 and 4 by 9. How many numbers we want? How many rational number? 10. 10 rational number. 10 rational number. So 10 की रिक्वायरमेंट है. मैंने बोला क्या करूं मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 10 plus 1 11 से n plus 1 से या किसी भी नंबर. कितना किया मैंने? 11 by 11 into 11 by 11. ठीक है. अच्छा मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो कितने नंबर्स मिलेंगे इस बीच में मुझे? इनफाइनाइट नंबर्स. लेकिन अगर मैं प्रॉपर उसमें लिखना चाहूं तो कितना आएगा? देखो यहाँ पर नंबर लाइन पे ये 0 है, इस -1 1 2 3. ओके, सो 4 तो मेरे पास ऑलरेडी थे. देखो -1 by 9 already है. I can write 0. 0 by 9 means 0 only. Okay, 1 by 9, 2 by 9, 3 by 9. Clear? लेकिन मुझे कितना 10 चाहिए था, जिससे काम नहीं चलेगा. ठीक है, क्या किया मैंने? 11 by 11 किया, क्योंकि डिनोमिनेटर है इक्वल, तो अब सोचना ही नहीं है मुझे. इनटू 11 by 11. ठीक है, कितना है? -11 by 99. Here 44 by 99. ठीक है,
So -11 कहाँ आएगा यहाँ पे -2 -3 up to -11. So I can write it as -11 के बाद क्या आएगा 10 आएगा 12 आएगा 10 आएगा. इससे मुझे क्या चाहिए बिगर नंबर चाहिए ना. देखो यहाँ पे -3 से बिगर है -2. नेगेटिव में उल्टा चलता है ना. यहाँ पे अगर होता है 11 तो 11 से 12 क्या होगा बड़ा होता है. यहाँ पे उल्टा रहता है ना. So -3 is or -2 which is bigger? -2 is bigger. Okay. यहाँ पे -10 11 के बाद पहले क्या आएगा बाद में bigger number -10 by 99 minus 9 by 99. फिर ऐसे करते करते यहाँ पे भी है. नेगेटिव नहीं लिखना आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो. बहुत सारे हैं -11 से 44 बहुत ज्यादा है. पॉजिटिव भी लिख सकते हो 1 by 99 2 by 99 up to 9 by 98. 9 नंबर यही पे हो गए है ना. तो आपकी चॉइस है आपको कहाँ पे लिखना है. समझा ना. ठीक है. लेट्स अगर मैं 11 की जगह इससे 5 से करता हूँ तो मेरा क्या होगा -5 by 5 से अगर मल्टीप्लाई करता तो -5 by 45. और यहाँ पे क्या था 20 by 45. तो भी हो जाते मेरे 10 20 तो यही तो पॉजिटिव में ऑलरेडी 4 यहाँ पे आएंगे 0 को मिला देंगे 5. ठीक है. तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कितना भी करो क्योंकि नेगेटिव आ गया तो और इंक्लूड हो गया हमारे यहाँ पास. यहाँ होते तो n+1 की रिक्वायरमेंट. ठीक है. तो ये आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है. और एग्जाम में कोई भी मेथड्स अप्लाई करोगे ऑल आर करेक्ट है. नेक्स्ट कंप्लीट दिस एक्सरसाइज कंप्लीट. अच्छा होमवर्क देखो कर लोगे क्या से होमवर्क एक्सरसाइज सेम है. इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 by 3 and 1 by 2. उसी के नीचे देखो यहाँ पे दिए अनसॉल्व. ये अनसॉल्व फर्स्ट ये क्या था क्लास पर गिव गॉट इट. ओके. चलो बेटा आपको क्लास पर पे आपको कैन यू डू दिस क्वेश्चन. यस फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड So second one is down. So quantity वाले तो मुझे पॉजिटिव भी लेना है. लाइक जो भी नंबर रहेगा मतलब 1 लाइक अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो लाइक 1 बाय तो 45 बार तो 45 लिख सकते हैं. हाँ आपने क्या किया किससे मल्टीप्लाई किया. अगर लाइक ये -3 के पहले वाले के नेगेटिव नंबर्स को लिख सकते हो अगर पॉजिटिव नंबर -3 के पहले के नहीं लिख पाओगे. पहले 10 है राइट साइड पे होगा. हाँ लाइक -2. हाँ यू कैन राइट वो आपकी चॉइस है ना. यू कैन राइट. समझो वो नंबर लाइन आपको एक क्लियर होना चाहिए. ठीक है. उसकी मुझे राइट साइड क्योंकि उससे लेफ्ट साइड जाएंगे तो दे आर लेसर देन दैट. बाकी मल्टीप्लिकेशन आपको पता है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा. सेकंड सेकंड सेम ही है. थर्ड ट्रू एंड फॉल्स है क्या. नहीं थर्ड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 इजी है. हो जाएगा. नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स. ओके हो जाएगा. ठीक है. कंप्लीट. अभी क्या देखो नंबर लाइन मैंने बताया. नंबर लाइन क्या है जहाँ पे हम एनी नंबर्स वी कैन रिप्रेजेंट. एनी नंबर्स मींस एनी रियल नंबर्स. ठीक है. दैट मीन वी कैन रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर एज वेल एज इरैशनल नंबर्स. ठीक है. तो ये 0 है 1 है 2 है 3 4 जनरली यहाँ पे -1 -2 -3 -4. ठीक है. If I say -1 by 2, where it will be lie? It will lie between here or here or anywhere else.
minus 1 by 2. So can we repeat the The bit. Where it will lie? Minus half in the number, on the number. The between minus 2 and Here minus 2 and minus 1? और कोई कुछ बोल रहा है? Minus So, 1. It's The a minus 1 and 0. Yeah. Minor. आप बोल रहे हो? So actually, can I write it as minus of 0.5? है ना? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ क्या होगा? पहले माइनस, अगर मैं कुछ ही ले रहा हूँ, माइनस 0.1, माइनस 0.2, है ना? तो माइनस इसके पहले ही आएगा ना माइनस 0.5, तो ये यहाँ लाई करेंगे ना इन बिटवीन, मिडिल में. क्लियर? ठीक है? माइनस 3/2. After 3 minus After 3 or here? minus. So actually it's a minus 1.5 na? So it will be in between. Right? होगा ना? Yes. आ गया ना? Got it? क्यों बेटा? ठीक है? तो अभी क्या अगर मैं बोलूं कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स वी हैव? हाउ मेनी? इनफाइनाइट. ओके? सिमिलरली तो इसमें नंबर लाइन इसी के लिए इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं. वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर एज वेल एज इरैशनल नंबर. ठीक है? प्रॉब्लम क्या होगा अगर मैं बोलूं 1.5 को रिप्रेजेंट करो आप, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट दिस विल बी 1.5. ओके? इफ आई से 2.5, so 2.5 or 2.7 whatever it is. ठीक है? लेकिन if I say that this is the representation of rational number, लेकिन irrational numbers को अगर मैं बोलूं √2 को रिप्रेजेंट करो, you cannot do, because उसकी वैल्यू नहीं पता मुझे 1.4111, क्योंकि वो क्या है? irrational है. that mean non terminating, non recurring, वो तो कहीं तक भी जाएगा, वो तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं. ठीक है? but I told you we can represent irrational numbers on the number line. ठीक है? तो उसका मेथड क्या है वो हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है? बहुत इजी एक्चुअली है. पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है आप लोगों ने? पाइथागोरस थ्योरम किसने नहीं पढ़ा? Let's say we have a right angle triangle A B C. प्रूफ उसका बाद में. ठीक है? So this angle is 90 degree. So angle के opposite length is called as hypotenuse, है ना? ये क्या हो जाएगा मेरा बेस और ये परपेंडिकुलर. ठीक है? तो Pythagoras theorem says that this is the largest side of the triangle. Hypotenuse is the largest side of the triangle. So hypotenuse square, that means AC square will be equals to the square sum of the other sides. That means BC square plus AB square. Got it? Okay. So this is Pythagoras theorem. पता नहीं है तो ये simple statement है. 90 का opposite जो होगा that is your hypotenuse. The hypotenuse length square equals to summation of the squares of the other two sides. ठीक है? BC square plus AB square. Clear? Got it? So let's say if I want to draw √2 on the number line, okay, can I write it as 1 plus 1? Can I? Yes, na 1 plus 1 2 ही हुआ ना, √2 हुआ ना. I'm not writing like this √1 plus √1. I cannot write it inside ना. अभी भूल जाओ इसको. 1 plus 1 2 ही होता है ना, उसका रूट ही तो है. आप फिर से उसको √2 लिख दोगे. Can I? Okay. So can I write 1 as 1 square? 1 square is 1 only, na? Yes. Okay. This also 1 square. Clear? Okay. And this is your root. Okay. Got it? So if I say this is 1, this is 1. So what will be the length of this side? Pythagoras theorem, na? What it told? AC square equals to AB square plus
BC square. So we have this AB value is 1. So 1 square plus BC value as 1 only. 1 square. Okay. AC square. So AC will be equals to root of 1 square plus 1 square. So that will be equals to root 2 only. So can I say that this will be root 2? Okay. Clear? So this one, और hypotenuse जो I will get, that will be of root 2 only. Got it? Okay. So can I draw a line of length 1? Can I draw? Number line पे, ठीक है? Number line पे draw करना है मुझे. So this is actually start with 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2. I'll start with 0 and draw a line of 1. ठीक है? Clear? Now this is 1. I have to draw perpendicular. Okay, perpendicular means 90 degree. You know how to draw 90 degree with the help of compass. How to draw? We need to take the protector. Okay, I'll draw an arc. Yes. Okay, with this arc we'll cut to arc, and again on this from this arc we'll cut. Okay, and this will be your 90 degree. Got it? So I'll draw an arc from here and cut and again cut. So this will be the perpendicular line. Okay. How much line length we want? 1. So I'll take an arc of 1 and cut. So this is 1. This is also 1. Okay. If I join these 2 points, let's say this point A and this point is B. If I join this point, so can I say this will be your right angle triangle whose base is 1 and perpendicular is 1. Whose base is 1, perpendicular. Can I say this hypotenuse will be root 2? Can I say this will be your root 2? देखो ना यहाँ पे. Okay, clear? So can I say this length will be the root 2? Okay, but we want this length on the number line. We don't want here. Okay, so can I take an arc of this length and draw an arc? Okay, so this will cut on the number line here. So can I say this length will be root 2? क्योंकि ये आर्क कितना था मेरा root 2 था ना. Got it? So this length will represent a root 2. So this is the point where root 2 will lie. This will be your. Got it? ठीक है? ये प्रोसेस आपको घर पे जाके कंपास में करना है. Clear? You get that this will be around 1.41. Are you getting? ठीक है? So this is your task. आपको homework exercise करना है and practice at least this one. ठीक है? ये क्वेश्चन इससे आएगा आपके एग्जाम. Okay, अच्छा ये बताओ ऐसे in general, if I say that draw this length on the number line, so we know how to draw root 2. We want to add that 1 na. So the process we start from 0 na. Can I start from 1 and draw a length of root 2? So this will be root 2 na. Okay, and this length is already 1. So from 0 it will be 1 plus root 2 na. Okay, instead of 0, now you draw a length of 1 from 1. Okay, clear? अभी यहाँ से हमें क्या करना है? Drop करेंगे और we'll join this. So this will be root 2 ना. So this length, arc length will be root 2 and 1 is already there. So the complete length will be your 1 plus 2. Got it? Clear? ठीक है? तो ये भी try करना और ये भी try करना. Got it? चलो.